साइंस स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हम ये सारे चैप्टर्स के फिलअप्स, आंसर द फॉलोइंग्स, मैथ द फॉलोइंग्स, एक के बाद चैप्टर वाइज करते जाएंगे, राइट। पहले सब चैप्टर के FIBs है, एंड जैसे जिस सीक्वेंस में आपको एग्जाम में पेपर में मिलेगा वही सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। चले करें शुरू। फिल इन द ब्लैंक्स। The process of giving birth of young ones of its own kind by living things is called, क्या बोलते हैं उसे, reproduction। REPRODUCTION, reproduction। Plants breathe through small pores called stomata is present in their leaves। Stomata, STOMATA, stomata। Living things move in search of food, shelter, and water. The leaves of touch me not plant closed when touched. Touch me not dash can make their own food। कौन अपना खाना खुद बना सकता है? Green plants। The development of seed into seedling is called germination। germination का स्पेलिंग क्या होगा? जर्मिनेशन। 2 सिलेबल में याद रखेंगे अपन, GERMI, जर्मिनेशन, NATION, जर्मिनेशन। Dash is present in the leaves, give them a green color। किसकी वजह से leaves का कलर ग्रीन होता है? क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरो, PHYLL, फिल। आप क्लोरोफिल की स्पेलिंग को 2 सिलेबल में याद रखोगे, CHLORO, PHYLL, क्लोरोफिल। डैश हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना उसके, वो गैसेस एयर में से एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो लीव, लीव, LEAF, लीफ माने पेड़ का पत्ता। यहाँ पे उसका प्लूलर आएगा। प्लूलर कैसे होगा? LEA, F हट के V हो जाएगा उसका, VES, लीव्स। A seed has a baby plant inside it। सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, राइट, पूरा। चलो नेक्स्ट। प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट, ऑनियन हैव फीब्रस रूट। फीब्रस का स्पेलिंग क्या होगा? FIBROUS, फीब्रस, FIBROUS, फीब्रस रूट। फीब्रस रूट किस टाइप का होता है? मानो कि ये ऐसा है, नीचे रूट इस तरह से होते हैं वो टाइप के, फीब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। चल आगे। बर्ड birds like sparrows have short and hard beak। की beak कैसी होती है? short and hard। चलो नेक्स्ट। स्पैरो की बीक देखी है आपने? पिजन, स्पैरो, इन सब कैसे शॉर्ट एंड हार्ड बीक, छोटी। चलो आगे। Chisel shaped beak helps a woodpecker to make hole in tree's trunk। woodpecker, WOOD, wood pecker, PECKER, woodpecker। चले आगे। Birds like crane walk through water which is called wading। WADING, wading। Claws of praying birds are called talons। इसकी हेल्प से ना वो इस तरह से शार्प उसके नाखून होते हैं पैर के, उसे टेलॉन्स बोलते हैं। उससे वो फ्लैश को टीयर कर सकते हैं, बर्ड्स उसके प्रे को पकड़ सकते हैं जो उसका शिकार होता है उसे, राइट। द अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अप स्टॉक मूवमेंट। यूपी अप, स्टॉक, STROKE, मूवमेंट, MOVEMENT, अप स्टॉक मूवमेंट। अप
stalk movement. Dash use dry grass, twigs and leaves to build their nest. कौन यूज करता है ये सब चीजों का? Birds. The woodpeckers make its nest in trunk of tree. जैसे ये जो ट्री का ट्रंक होता है ना, मान लो ये ट्री है तो ये लोग इसके अंदर अंदर ऐसे अपनी चीजें से बिक से कुतर कुतर के लकड़ी निकालते हैं और उसके अंदर वो अपना माला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. किंगफिशर burrow a hole on the bank of river, HOLE hole. ऐसे जमीन के अंदर से वो जाके ऐसे जगह बनाते हैं. Parents bird sit on the eggs to keep them warm. उसको वार्म रखने के लिए वो उसके ऊपर बारी बारी से जो पेरेंट बर्ड होते हैं ना वो बैठते हैं. ठीक है, चले आगे. Let me remove all this just once, then we'll continue, right? चले next. This is the smallest unit of our body, cell. There are 8 organ systems in our body. The excretory system removes waste from the body. Waste मतलब जो गंदगी होती है वो. WASTE ये वेस्ट का स्पेलिंग है. और बॉडी के अंदर तो बहुत सारी होती है तो उसको प्लूरल लिखा है, वेस्ट. The digest system helps in the digestion of food. Digestion में आएगा digestive, DIGEST, digest लगेगा IVE, digestive. Next, eyes, ears, eyes, nose, skin and tongue are the sense organs. सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों क्या है? सेंस ऑर्गन है. कौन कौन से? ईयर्स, आईज, नोज, स्किन एंड टंग. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड. मोस्ट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किसके ऊपर वो रिले करते हैं? प्लांट के ऊपर. डिपेंडेंट है उसके ऊपर. ठीक है, चले नेक्स्ट. Animals that kills other animals to eat their flesh are called. जो किल करके दूसरे एनिमल को किल करके खाते उसे क्या बोलेंगे? किल करते उसे कार्निवोर्स. कार्निवर्स, CARNI, कार्नी, VORES, कार्निवोर्स. आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओवर. क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट. उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है. प्लांट, एनिमल्स animals and human beings are नेचुरल भी है एंड लिविंग भी है, दोनों है, राइट? नॉन लिविंग नहीं है, नेचुरल एंड लिविंग. प्लांट को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, सबको गॉड ने बनाया है. दे आर नेचुरल एंड लिविंग थिंग्स, बोथ बी एंड सी. अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू स्किन. Birds, insects, and lizards reproduce by laying eggs. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, skin, and tongue. Non-living things इसमें से क्या नहीं कर सकती? They cannot breathe, do not breathe. Non-living things do not breathe. The fruit having only one seed inside it. Mango. The stems of trees like cherry and sesame are hard and woody. The reproductive organ of plant is flower. Which of the following function is not performed by root? तो ये जो A, B and C है वो roots के function है. लास्ट जो है, इट हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वो रूट का फंक्शन नहीं है. डी, वो रूट के फंक्शन है. इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल,
It absorbs water and minerals from the soil. It stores extra food. All these are function of fruit except C. Alright, चले आगे बढ़ते हैं. This plant has fibrous root. कौन से प्लांट के रूट फिब्रस होते हैं? राइस के. वीक स्टेम आर फाउंड इन वाटरमेलन. वाटरमेलन के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. Stem of this is eaten as food. Sugarcane. The hummingbird sucks nectar from a flower with its long and pointed beak. This bird uses its sharp, strong, and hooked beak to eat small animals. Vulture. Which is not correct about water animal? तो देखो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए है ना उसमें से ए सी डी सही है. They have broad and flat beak. They eat small plants or tiny water animals. They have holes on the side of the beak. ये सब सही है. They have long tube-like pointed beak. वो गलत है. So option B is your answer. To catch and eat their food, birds use their beaks. Birds खाना खाने के लिए, पकड़ने के लिए, अपना फूड पकड़ने के लिए वो beaks का यूज करते हैं. Feet with 3 toes in front and 1 at the back help the perching. किसके लिए? तो टू किस में हेल्प होती है ऐसे टाइप के लेग की वजह से? ऐसे फीट जो होते हैं ना बर्ड्स के हमने देखे होंगे उसमें 3 टो ऐसे आगे होते हैं. 1 2 3 ऐसे मिला के देखो इस टाइप के होते हैं. 1 2 3 ऐसे पीछे टाइप के जो होते हैं ना उसके फीट, उसकी वजह से मान लो कि ये डाली है तो वो उसको ऐसे बैठे दोनों के बीच फीट एकदम मजबूती से जकड़ सकते हैं. टू होल्ड ट्री ब्रांच फर्मली. नेक्स्ट. This bird has talon which help to catch or hold its prey firmly. Owl. This keeps the birds' eggs warm and also protects them from enemies and bad weather. Nest. Which bird stitches 2 leaves together with its beak to make a nest? तो स्टिचिंग का काम करता है टेलर. तो इस बर्ड को क्या बोलेंगे हम? द टेलर बर्ड. This type of feathers help the bird to fly. Flight feather. फ्लाई करने के लिए कौन से आएंगे? फ्लाइट फीदर. दिस बर्ड लेज एग्स इन क्रोस नेस्ट. कक्कू बहुत आलसी होती है, वो एग्स ना क्रो के नेस्ट में रखे आती है. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज बर्ड्स फ्लाई क्यों कर सकते हैं? व्हाट आर द रीजन? तो उनके जो बॉन्स होते हैं वो एकदम होलो. होलो माने एकदम मतलब कोई उसके अंदर वेट नहीं होता है. राइट. दूसरा क्या रीजन है? फीदर्स, उसमें जो फीदर्स होते हैं उसकी वजह से. तीसरा मसल्स, उसके मसल्स फ्लाइंग के लिए कंफर्टेबल होते हैं. उसके विंग्स. दीज आर द आंसर. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो विंड पाइप, विंड पाइप जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. दिस हेल्प्स in the movement of the bones, muscles. MUSCLSES muscles. MUSCLSES ये आपकी में ऑप्शन में दिया होगा. नेक्स्ट इज द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये काम किसका है? हार्ट का. एडल्ट के बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? देयर आर about 206 bones in an adult. Kidneys remove waste from the blood in the form of urine. Kidneys urine के फॉर्म में सारा बॉडी का वेस्ट निकालती है. These animals uses its, sorry I missed one. Which system helps to reproduce baby?
Re babies reproductive system. These animals uses its sharp front teeth to eat fruits. Squirrel. Flesh-eating animals like tiger, lion, etc. have उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपको। तो देखो, उनके उनको ना शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं एंड पीछे, सॉरी, शार्प पॉइंटेड एंड कार्निवरस टीथ इन फ्रंट। आगे के जो टीथ होते हैं वो शार्प पॉइंटेड कार्निवरस टीथ होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। ये दोनों होते हैं। सो ऑप्शन बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस shows the correct ऑर्डर ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये ग्रास है, उसे कौन खाता है? ग्रास ओपर। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ग्रास को खाता है ग्रास ओपर, फ्रॉग को खाता है स्नेक। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, वी आर डन विथ अवर क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको दिए होंगे ट्रू और फॉल्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। सही है ना, लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए। देन नेक्स्ट में क्या दिया है आपको? नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन। नहीं कर सकते। फर्नीचर, सो ये फॉल्स हो गया सेंटेंस। फर्नीचर, टेलीविजन एंड बिल्डिंग्स आर नेचुरल। फॉल्स, इसको तो हम बनाते हैं, गॉड नहीं बनाते। नेचुरल जो है वो गॉड की बनाई हुई चीजों को बोलते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू स्पाइरेकल्स। रॉन्ग, गिल्स के थ्रू ब्रेथिंग करती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। सही है, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फीलिंग्स नहीं होती। अ नेस्ट इज अ बर्ड्स हाउस। ट्रू, बर्ड्स यूज ब्रिक्स टू मेक देयर नेस्ट। फॉल्स, वो तो ट्विग्स, फिर वो फिदर्स, थ्रेड्स, ऐसे सब चीजें यूज करते। The cuckoo keeps its eggs in pigeon's nest. False, right? वो क्रो के नेस्ट में रख के आती है। चलो नेक्स्ट। Crows use pebbles and stones to make their nest. False. The feathers found under the flight feathers of a bird are body feathers. True. Animals need food to live, grow and remain sick. False. लिव एंड ग्रो सही है, बट वो सिक रहने के लिए नहीं, हेल्दी रहने के लिए चाहिए होता है। दैट्स वाई इट्स फॉल्स। एनिमल्स विच ईट animals which eat only plants are called herbivores. True. जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हम हार्बीवर्स बोलते हैं ना, राइट? चलो नेक्स्ट। कार्निवर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ट्रू। rats sucks rats suck blood of other animals. False. Tiger has long and sticky tongue that remained rolled inside the mouth. False. अब मैच द फॉलोइंग। उसमें आपको ए बी दिया होगा, बीच में आंसर का कॉलम होगा, आपको सही लिखना है। एज ऑफ नाउ मैंने आपको सब सही करवाया है, राइट? एग्जाम में आपको ऐसे दो कॉलम दिए होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। ए आंसर्स, बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो इसका इसका आंसर जो है उसको बी से उठा के यहाँ पे कॉपी करना है। ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें ही दिया होगा, राइट? तो चलो एक एक बारी बारी से करते हैं। माउंटेन्स, नेचुरल थिंग्स, फर्नीचर, मैन मेड थिंग्स, फिश, गिल्स, प्लांट्स, टोमाटा, radish, root, papaya, many seeds, grapevine, fig stem, trunk, hard and woody stem, respiratory system, lungs, sucks the blood, mosquito, tears the flesh, lion, short and broad beak, swallow,
broad and flat beak, duck, short and hard beak, pigeon, strong and chisel shaped beak, woodpecker, sharp, strong and hooked beak, owl, muscular system, muscles, digestive system, stomach, excretory system, kidney, nervous system, brain, chew the cud, buffalo, gnaw the food, squirrels, swallow the food whole, पूरा का पूरा निगल जाना, snake. अब change the underlined word. Question number 5. Most roots grow above the ground. तो यहाँ पे आपको above के नीचे underline दिया होगा, आपको above के बदले लिखना है below, बाकी का sentence as it is. Most roots grow बिलो द ग्राउंड. रूट जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे होते हैं, इस तरह से, ना कि ऊपर, राइट, ग्राउंड के नीचे जाते हैं रूट. स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट. स्टेम के नीचे अंडरलाइन होगा, प्लांट का फूड लीव्स बनाते हैं, लीव्स आएगा, तो आपको लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, स्टेम के बदले लीव्स लिख के बाकी का सेंटेंस एज इट इज. मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू सीड्स. नो, फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में होते हैं. मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फ्लावर्स में से फ्रूट्स बनते हैं, सीड नहीं बनते. पहले छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं फ्रूट में. फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम. सॉरी, फ्रूट्स हैव फ्लावर इनसाइड देम. नो, फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम. फ्रूट के अंदर सीड होते हैं. लीव्स फिक्स द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. लीव्स नहीं करते, रूट करते हैं. रूट फिक्स द प्लांट, राइट, आपको लीव्स के बदले लिखना है रूट्स. थिंग्स गिव्स एनर्जी टू वर्क. नो, थिंग्स नहीं, फूड. फूड गिव्स एनर्जी टू डू वर्क. Cats and dogs use their skin to drink milk. No, वो लोग अपनी टंग से पीते हैं. टंग, TONGUE. Carnivores are plant eating animals. No, plant eating animals herbivores है, right? Herbivores. Giraffe uses long tail to इट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज. टेल की यूज नहीं करता, वो नेक का यूज करता है. टेल के नीचे, टेल की जगह पे आपको नेक लिखना है. टेल के नीचे आपको अंडरलाइन दी होगी, के बदले उसको हटा के आपको नेक लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज. एलिफेंट यूजेस ईयर्स फॉर स्मेलिंग फूड. ईयर्स के नीचे अंडरलाइन होगा, तो हटा के आपको ट्रंक लिखना है. चले, क्वेश्चन नंबर 6. हु एम आई? I walked in shallow water. Crane, CRANE, crane. I have webbed feet that help me to paddle. Duck, DUCK. I have talons that help me to hold my food. Eagle, EAGLE. I have strong legs and hard claws to scratch the earth. Hen, HEN. I have claws that help me to hold on branch firmly. Sparrow, SPARROW. I enter my nest through an opening at the lower end. Weaver bird, WEAVER, weaver bird. I make my nest by stitching two leaves together with my beak. Tailor bird, TAILOR, tailor bird, BIRD. I use stone and pebble to make my nest. Penguin. My nest is just like a shallow cap. Vulture or eagle? Vulture or eagle? VULTUREEAGLE. Vulture or eagle. To lay eggs, I make a hole in tree trunk. Woodpecker. WOOD, wood. Pecker, PECKER, woodpecker. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन द फॉलोइंग. ये आपको बहुत ध्यान से करना है, स्पेलिंग्स सारे याद रखने. रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू young ones of its
own kind is called reproduction. Breathing, process of taking in oxygen, taking in, हम अंदर क्या लेते हैं उसको टेक इन करते हैं, राइट? ऑक्सीजन को, किसको? ऑक्सीजन को, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का स्पेलिंग क्या होगा? OXY, ऑक्सीजन, GEN, ऑक्सीजन। रिवाइज मोर टाइम, वन मोर टाइम, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन dioxide is called breathing. Process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. कार्बन डाइऑक्साइड स्पेलिंग उसका एक बार देख लेते हैं। CARBON, कार्बन, DIO, ऑक्साइड, XIDE, CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड, DIOXIDE. Natural things, things made by nature is called natural things. Things made by nature is called natural things. Germination, the development of a seed into seedling is called germination. Talons, sharp claws of flesh-eating birds are called talons. Birds of prey, birds that hunt and eat animals are called birds of prey. Digestion, the breaking down of food into a simpler form. किसके लिए? To give energy, एनर्जी देने के लिए, is called digestion. Excretion, excretion is a process by which animals rid themselves of all the waste products. Herbivores, animals that eat only plants are called herbivores. Next is carnivores. इसे बोलेंगे animals that eat flesh. Are called carnivores. Animals that eat flesh are called carnivores. Next is food chain. फूड चेन का मतलब क्या होता है? एक जो एनिमल होता है वो दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, ऐसा सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फूड चेन, राइट? तो कैसे लिखेंगे उसे? लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन. क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर for food is called food chain. चलो आगे. बीच में ये छूट गया, omnivores. Animals that eat plants and flesh, दोनों खाते हैं. Animals that eat plants and flesh of other animals are called omnivores. कार्निवरस में भी यहाँ पे आई थिंक फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आता है. लेट मी एडिट इट. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोर. ये चलो, नेम द फॉलोइंग.
Name two animals that reproduce by giving birth to babies, tiger and cow. Name two animals that reproduce by laying eggs, snake, lizard. Name any two stems which are used as a food by us, potato, ginger. Name the different parts of a plant, roots, stem, roots, stems, branches, leaves, flowers, fruits. Name Name two perching birds, crow, sparrow. Name two climbing birds, parrot, woodpecker. Name any two birds which have short and hard beaks, sparrow, pigeon. Name the materials used by birds to make their nest, twigs, grass, dry leaves, thread, wood, pebbles, feathers, bits of paper. Name the three types of feather. Down feather, फिर आएंगे body feather, down feathers, body feathers and flight feathers. Name two movements which are shown by birds. Upstalk movement and downstalk movement. ये दो टाइप की मूवमेंट जब बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं तो हमें देखने को मिलती है. कौन कौन सी? अपस्टॉक मूवमेंट्स एंड डाउनस्टॉक मूवमेंट. ये जो उसके फीदर्स होते हैं ना, उसके फ्लाइट फीदर्स, उसकी हेल्प से वो लोग करते हैं. दोनों का आपको स्पेलिंग याद रखना है. एरर, लेट मी चेक आउट. STUP अप, STROKE, UP अप, STROKE. और यहाँ पे आएगा डाउन टॉर्क, TOWN, डाउन, STROKE, डाउन स्टॉक मूवमेंट. STROKE, downstock movement. Name the parts that form circulatory system. कौन कौन से है वो? Heart, blood and blood vessels. Name 5 sense organs. Eyes, ears, eyes, tongue, nose and skin. Name the smallest unit of life, cell. Name the system made up of brain, spinal cord and nerves. Is nervous system. नर्वस सिस्टम का स्पेलिंग ध्यान से याद रखना है. देखो, NERV, नर्व जो है वो लिखना है. यहाँ पे नर्व्स है वो आप नहीं लिखेंगे, ये सटा देंगे. एंड OUS, नर्वस सिस्टम. Name the system that carries oxygen and digested food to all parts of the body. That is circulatory system. Circulatory system. CIRCULATORY, circulatory system. Question number 9 आपका है. Answer the following question. What are man-made things? Things made by man are called man-made things. Things made by man are called man-made things. Why do animals move from one place to another? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? Animals move from one place to another in search of food and water. List the features that all living thing possesses. ऐसे फीचर्स बताइए कि जो लिविंग थिंग्स में है. कौन कौन से है? लिविंग थिंग्स नीड फूड, दे ग्रो, respire, feel, reproduce and live for a certain age.
How do animals breathe? Animals breathe through lungs, gills, spiracles, moist skin, etc. Animals breathe through lungs, gills, spiracles, moist skin, etc. What is the stem? A stem is the main part of the shoot. This part generally grows above the ground. What is photosynthesis? The process of making food by the plants with the help of air, water, sunlight, and chlorophyll is called photosynthesis. The process of making food by the plants with the help of air, water, sunlight, and chlorophyll is called photosynthesis. What does a seed need to grow? A seed needs air, water, and sunlight to grow into a plant. What do hummingbirds? Why do hummingbirds have long and pointed beak? Hummingbirds have long and pointed beak to suck nectars from flowers. What type of beak does a sparrow have? Sparrows have strong, short, and hard beaks. What type of feet do ducks and swans have? Duck and swans have webbed feet. What helps the birds to change its direction while flying? A bird can change its direction while flying with the help of its tail. Why do birds make nests? Birds make different types of nests to lay eggs and keep them safe. Which places birds choose for making their nests? Birds make their nests on trees, old buildings, window ledges, on ceiling fans, etc. What is the main function of muscular system? Muscular system helps in the movement of bones, which in turn make the body move. Muscular system helps in the movement of the bones, which in turn make the body move. How are kidneys and skin useful to our body? Kidneys and skin remove the waste in the form of urine and sweat. Why do animals need food? Animals need food to grow, for energy, and to stay healthy. Why do giraffes have long neck? Giraffes have long neck to eat leaves present on the branches of tall trees. What type of teeth does carnivores have? Carnivores have sharp pointed teeth in front, strong and broad grinding teeth at the back. How can you take care of domestic animals? We should take care of domestic animals by giving them clean water, food, and shelter. Answer in detail. Question number 10 रहेगा ये आपका. Mention any two functions of root. The main two functions of root are it fixes the plant firmly to the soil, it absorbs, दो फंक्शन है उसके, it absorbs water and minerals from the soil. The main two functions of root are
It fixes the plant firmly to the soil. It absorbs water and minerals from the soil. What is a leaf? Mention two uses of leaf. A leaf is a part of plant which grows on stem. The uses of a leaf are: first, they prepare food for the plant. Second, they help in the exchange of gases. Why are the beaks of doves and geese broad and flat? The beaks of, sorry, यहाँ पे ducks है, it's ducks. The beaks of ducks and geese are broad and flat to hold and swallow the water plants or animals. पहले तो वो swallow करते हैं, जब एक बार वो पानी बाहर चला जाता है फिर वो उसे निगल जाते हैं. Once the water flows out, पानी बाहर कहाँ से जाता है? Through holes present on either side of the beak. The beaks of ducks and geese are broad and flat to hold and swallow the water plants or animals. Once the water flows out through holes present on either sides of beak. How is the beak useful to the bird? कैसे हेल्प होती है? Birds have no teeth to break the food, so they use their beak to catch and eat the food. It also protects birds from their enemies. How many organ systems are there in our body? Name them. There are 8 main organ system in our body. Right? कौन कौन सी है? मैंने आपको ट्रिक बताई है. कौन कौन सी? डॉक्टर सैम NCER. Digestive system, respiratory system, skeleton system, muscular system, nervous system, circulatory system, excretory system, reproductive system. राइट? कौन कौन सी? फिर से एक बार याद करते हैं. डॉक्टर सैम NCER. Digestive system, respiratory system, skeleton system, muscular system, nervous system, circulatory system, excretory system, reproductive system. चलो next. Name the parts that form the nervous system. What does this system do? The brain, spinal cord, and nerves form nervous system. This system helps us to do different things such as hear, touch, talk, walk, etc. Chalo next. How do birds take care of their young ones? Birds feed their young ones, keep them warm, protect them from enemies, and teach them to fly. Birds feed their young ones, keep them warm, protect them from enemies, and teach them to fly. How does a tailor bird make its nest? Tailor bird uses a thread or a wool to stitch two leaves together with its beak. The bird makes its nest cozy by keeping cotton, wool, soft fibers, and hair in it. How do cows and buffaloes use the teeth to eat food? कैसे यूज करते हैं वो टीथ को? Cows and buffaloes swallow their food and fill the stomach. When they rest, they bring back this food from the stomach into the mouth and chew it for hours.
This is known as chewing the cud. They have strong and broad grinding teeth to chew the food. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Cows and buffaloes swallows their food and fill the stomach. When they rest, they bring back their food and fill the stomach. Sorry, when they rest, they bring back this food from the stomach into the mouth and chew it for hours. This is known as chewing the cud. They have strong and broad grinding teeth to chew the food. One more time, cows and buffaloes. Cows and buffaloes swallows their food and fill the stomach. तो यहाँ पे देर आएगा, वो अपना टमी फुल कर लेते. fill their stomach. When they rest, they bring back this food from the stomach into the mouth and chew it for hours. This is known as chewing the cud. They have strong and broad grinding teeth to chew the food. Question number 11. Difference between first living things, non-living things. Living things need food and water. Non-living things do not need food and water. They do not living things, they breathe. Non-living things में अगर they do not breathe. Living things के example है animals, plant, etc. And non-living things के example है table, chair, pen, etc. चले. Second, stem, root. Stem is the aerial part of the plant body. जैसे plant body का aerial part वो ऐसे जमीन के ऊपर होता है, ये वाला, ये aerial part है stem. While root is the underground part of a plant body. ऐसे ground के नीचे होता है root. Stem bears leaves, birds, flowers. यहाँ पे leaves, stem bears leaves, birds, flowers and fruits. Stem के ऊपर ये सब आता है, root के ऊपर नहीं आता. Root doesn't bear leaves, birds, flowers and fruits. All right. Hope this is clear to you. We are done with the revision. All right. See you in the next session. Till then, happy learning. Bye bye.